Good morning bro, welcome to the channel, and today I want to talk about my motivation. And by giving my own story, I also want to give you an invaluable piece of advice about motivation. So bhai dekho, my motivation, for me at least, is the goal itself. The end goal is motivating for me. For example, YouTuber ho, the end goal is to get 1 million subscribers. That end goal should be motivating bhai. समझो मेरा main goal रहता था 50 subscribers रहना. That's not motivating at all, is it now? And that's the thing. The end goal in itself should have you salivating from your mouth bhai. मुंह में से पानी निकलना वो goal को सोचे जब. भाई 1 million subscribers सोचे जब. Oh my god भाई, हाँ भाई, like जैसा रहता ना, शिकार करता जब एक टाइगर प्रे को देखता ना, समझो ज़ीब्रा आ गया, वैसे जिन नज़रों के साथ देखती हूँ मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को, वैसे ही नज़रों के साथ तुम्हारे को अपनी गोल को देखना है भाई. इफ़ यू डोंट हैव दैट भाई, दैट मीन्स योर गोल इज़ नॉट वर्थवाइल इनफ एंड यू हैव टू सेट योरसेल्फ अ बिगर गोल. भाई फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट द जिम. समझो तुम्हारा गोल है कि इतने बड़े बाइसेप्स होना है, इतने बड़े नहीं मतलब डिसेंट बाइसेप्स. यू कैन सी मेरा शोल्डर थोड़ा बहुत डिफाइंड है, मगर तुम्हारा गोल है इतने मोटे बाइसेप्स होना है. दैट इज़ मोटिवेटिंग भाई. ये मोटिवेटिंग नहीं है कि थोड़ा टोन होना है, थोड़ा 5 किलो लूज करना है. दैट्स नॉट मोटिवेटिंग एट ऑल. ऑफ कोर्स इसका मतलब नहीं है कि शॉर्ट टर्म गोल्स मत रखो. ऑफ कोर्स वो भी रखना जरूरी है भाई. यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन. भाई समझो एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, लेफ्ट राइट लेना पड़ता भाई, सीधा जाना पड़ता, स्लाइड लेफ्ट लेना पड़ता, स्लाइड राइट. मगर जो एंड गोल है ये डायरेक्शंस फॉलो करे तो ही एंड गोल में पहुंच सकते हैं. You cannot get the end goal without following the proper directions, and think of these directions as your short-term goals. Another reason why I'm so motivated, that my motivation is sky high, is that I really want to retire my dad. My dad is currently in his mid-40s, almost 50 now, and the biggest motivation for me by far is to, help my family out, is to actually be there and provide and actually fulfill my responsibilities as a man. And I feel like that's the biggest reason why I'm motivated. Take a look at this clip. अच्छा जब बुक दे दो, वापस बुक दे दो. मेरे बेटे को पढ़ाकू को बुक दे दो. शाबाश मेरा बेटा. बेटे तुम जल्दी कमाना शुरू करो बेटे, फिर मैं रिटायर हो जाता हूँ. देखो By the first time I had seen this clip when I was 15, I didn't understand it. Magar now that I'm older, I can actually understand it now. My dad was tired for working his 9 to 5 job and he really wanted me to step up. Even though Hasi Mazak mein bole, you can tell that he actually meant it. And inshallah, by the time I'm 25, that will become a reality. I will be retired myself and I will retire my dad along with me. Another thing that plays a major role in your motivation is your testosterone levels. By the more testosterone you have, the more motivated you will be. Simple as that. Testosterone के बारे में मैं 1000 चीज़ें बोल सकता हूँ. This is not the video for testosterone. मगर a few quick tips. अच्छे से सो भाई, नींद अच्छे से लियो, कोलेस्ट्रॉल लियो, हार्मोन्स सही रखो भाई. लाइक तुम्हारा जो भी हार्मोन्स है फक अप नको करो. एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स लियो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लियो, और अंडे खाओ भाई, सनलाइट लियो. दैट्स ऑल आई विल टेल यू. भाई मोटिवेशन एक बहुत पावरफुल चीज़ है. ऑफ कोर्स डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हैं, मगर इट्स बेटर इफ यू वर्क विद मोटिवेशन. भाई डिसिप्लिन शुड बी योर लास्ट रिजॉर्ट, नॉट योर ओनली रिजॉर्ट. भाई मोटिवेशन इज द थिंग दैट रियली गेट्स यू थ्रू दोज टफ डेज. अगर मोटिवेटेड रहे भाई, काम में मजा आता है भाई. व्हाई वुडंट यू वांट दैट? व्हाई वुडंट यू वांट योर वर्क टू बी मोर फन एंड मोर बेरेबल एंड मोर टॉलरेबल? एंड माई फाइनल पॉइंट, द वर्क दैट यूर डूइंग itself should be motivating भाई. You should be motivated by the work itself, not the goal. By when you're motivated with the goal and by the work itself, by the action of doing the thing, you will become unstoppable. By for example, let's take a look at content creation. The end goal of 1 million subscribers in itself is very motivating. But at the same time, the act of recording videos is motivating for me. So both these things really push me. They push me to greater extents and to reach new levels. You have no idea how powerful these two things are. Once you find the thing that you actually look forward to, for example, football, once you get a hang of playing it, you really enjoy the game. And of course, your goal may be to become a professional player. Magar the act itself of playing football is very motivating. Once you find the thing that motivates you intrinsically, stick to it. Your motivation shouldn't depend on other people. It should come from within. And I already told you how to get your motivation to come from within. And with that, I'll end the video. I hope you have a very elastic day, bro. This is your neighborhood friendly civil signing off. And as always, bye.